आपने लास्ट व्लॉग में आपने देखा कि कैसे हम लोग यहाँ पर हमने पूरा आपको इस सोल्यूशन बताया कि कैसे आप माउंट एवरेस्ट तक चढ़ सकते हैं, कौन से आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन से आप बात कर सकते हैं, उनके प्रॉपर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें यू नीड टू टेक केयर ऑफ। बट नाउ अब हम आपको बताते हैं कि क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी, क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करना अपने साथ ताकि आप उस पीक तक, अपने ड्रीम तक पहुँच पाएँ। उसके लिए हम आ गए हैं यहाँ पे मैरमॉट के शॉप में, और ये जो एक प्रॉपर रिटेल स्टोर है इसमें आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन मिलेगा। ये यहीं पर ही काठमांडू में ही है, और यहाँ पर ही आपको अपैरल से लेके सारे के सारे इक्विपमेंट्स मिलने वाले हैं। और हमारे साथ है मिस्टर लामा, और लामा इज द पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल Hi everyone. yeah, welcome to the Culturebox by the way. And यहाँ पे लामा इज द पर्सन हु जस्ट लिटरली गonna हेल्प अस। आपको पूरा एक वन स्टॉप सोल्यूशन बताएंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए, एवरेस्ट के पीक तक पहुँचने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम काठमांडू। बेसिकली पूरा जर्नी दो में डिवाइडेड है, दो स्पेसिफिक पार्ट है। एक है काठमांडू टू एवरेस्ट बेस कैंप, उसके लिए एक डिफरेंट सेट ऑफ आपको कपड़े चाहिए, डिफरेंट सेट ऑफ आपको इक्विपमेंट्स चाहिए। और फ्रॉम एवरेस्ट बेस कैंप टू पीक, उसके लिए थोड़े से और आपको डिफरेंट सेट ऑफ आपको क्लोथिंग्स लगेंगी। तो सारा कुछ आपको आज बताने वाले हैं यहाँ पे लामा। एंड लामा, आई एम श्योर दिस गोना बी अ मोस्ट ऑफ द, आई वुड से द मोस्ट सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो, एंड यू डेफिनेटली गोना हेल्प us and our audience to understand कि कैसे कैसे चीज़ें वो अपने आप को prepare करें before going on this adventurous journey. Okay, ma'am. Hi everyone. We are the distributor for Rab and Mammoth in Nepal. So we are here since 15 years. 15 साल से इधर अभी तक. Wow. So we have equipped many people, right? So without taking time, let's begin it. What happens, right? From the base camp from Kathmandu to the base camp, you're gonna equip very lightweight, right? Because during the daytime, it's very hot. And in the evening time, the temperature drops down, right? Just once you cross to 2,500 meter, there's gonna be a big fluctuation in temperature. So in the daytime, you're gonna put some kind of soft shell trousers, which is like this one. So this is going to be your walking trousers, still base camp, with a soft shell kind of fabric, which is like a wind resistant and water repellent, but with a very lightweight stretchy one, so you can have a easy mobility. करेक्ट। सो बेसिकली गाइस, ये इनका कहने का मतलब है ये एक विंड रेजिस्टेंट, मतलब अगर बहुत तेज हवाएं चलती है तो डेफिनेटली उससे बचाता है। सॉफ्टर है, लाइट वेट है, तो आप इजीली आप चल पाएंगे। और ये ज़्यादा मोटा नहीं है, बिकॉज जब आप थोड़ा हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे सन रेज भी उतनी डायरेक्ट होती है, तो आपको गर्मी लगता है। तो उसके लिए आपको एक ऐसा फैब्रिक चाहिए जो ब्रीथेबल हो, जिससे आपको आराम से आपका एयर आपका फ्लो हो सके, और उस वजह से ऐसे काइंड ऑफ ट्राउजर्स हेल्प करेंगे। ज़रूरी नहीं आप ऊपर जा रहे हो तो आप सारे के सारे हैवी चीज़ें ही ले, बिकॉज जितना हैवी होगा उतना ज़्यादा आपको स्वेटिंग भी होगी, आप थकेंगे भी, हैवी भी होगा। इसका कॉस्ट क्या है? This one, it starts from 14,500 Nepali rupees. Then after we do have like a variation. Which one do you want to go with it? Okay, ये 14,500 से स्टार्ट होता है नेपाली रुपीस में, और उसके बाद ये फिर और ऊपर चला जाता है, डिपेंड अपॉन आप कौन सा भी आप लाइक क्वालिटी का ले रहे हैं। ये रैब का है, द माउंटेन रेंज। रैब इज वन ऑफ द नोन कंपनी टू बिल्ड ऑल दिस अपैरल्स, जो कि माउंटेन्स पे हेल्प करता है पीपल को ट्रैवल करने के। इसके बाद ये तो सर नीचे का हो गया जो कि आप नॉर्मल ट्रैक के लिए आप कर रहे हैं। इसके बाद ऊपर क्या पहन सकते हैं? For the upper, right? For the first days, you're gonna put some base layer and a wind cheater. Okay, it's a wind cheater. Wind cheater is kind of wind cheater is not only a wind, right? Technically, you need we call it hard shell. Hard shell. Right? Because this one with the friction, it produces heat energy to your body, right? Correct. Then the wind cheater, it will work like a hard shell that will block all the wind and rain. That is designed to keep you dry in any kind of wet condition. करेक्ट। सो इसके बाद आप ऊपर आप ऐसा विंड शीटर ले सकते हैं। विंड शीटर में बेसिकली होगा कि जितने भी एयर आ रही है वो उसको एक ऐसा ट्रैप कर देगा, एक ऐसा शेल से बना लेगा, ताकि आपके अंदर वो ठंडी हवाएं ना जाए, और साथ में जो आपकी बॉडी हीट है वो अंदर के अंदर ट्रैप रहे। प्लस ये सॉफ्ट है और ये लाइट है, तो इस वजह से इट वुड बी ईजियर फॉर यू कि आप इसको पहन के ऊपर आप चढ़ पाएँ, इवन इन द टेम्परेचर जहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट सनरेज जा रही है। इसका कॉस्ट? This one it starts from 8,000, which is a merino fabric. ओके, सो इसका कॉस्ट है 8,000 रुपीज़, जो कि मरीनो फैब्रिक से बना हुआ है। और ये मरीनो से बना हुआ है, इस वजह से इसके अंदर जो भी हीट है वो आपकी बॉडी की हीट अंदर ही अंदर ट्रैप रहेगी। 8,000 नेपाली रुपीज़ से स्टार्ट होता है। इट डिपेंड्स अपॉन अगेन जो भी आप क्वालिटी में आप जा रहे हैं।
इसके right? ऊपर क्या नामचे पहुंच गए उसके From बाद Namche, right? Then after you, it will change the whole scenario because from Namche, in the morning time the sun rises, right? But after 2 o'clock, when the sun goes down, then suddenly the temperature drops down, and in that time you won't be walking. You'll be staying idly, right? In that time, you need a mid layer. Then after a down jacket, or else a heavy down jacket. So it depends upon the people how they want to go with it, right? For example, people who have a porter, they want to carry everything. Some people who want to go lightweight without a porter, they just carry their essential things. करेक्ट. सो दैट मीन्स गाइज नामचे इज द प्लेस जहां तक आप एक लाइट वेट आप फैब्रिक और अपने कपड़े जो मैंने दिखाया इसके साथ आप काम चला सकते हैं. नामचे के बाद एकदम से आपका टेम्परेचर गिरने लग जाता है. नामचे वो जगह है जहां से एवरेस्ट बेस कैंप 4 to 5 days का रह जाता है. उधर से आपको एवरेस्ट बेस कैंप तक जाने के लिए जो विंड और जो टेम्परेचर है वो थोड़ा हार्श हो जाता है. इस टाइम पे या तो आपको एक हैवी डाउन जैकेट चाहिए क्योंकि उस टाइम पे आप सिर्फ दिन में चढ़ाई करते हैं, रात में आप सिर्फ एक जगह पे बैठ जाते हैं. जब एक जगह पे बैठ जाते हो टेम्परेचर बहुत जल्दी नीचे गिरता है और नीचे गिरता है तो उस टाइम पे आपको एक हैवी डाउन जैकेट चाहिए होगा या फिर एक आपको एक मिड लेयर डाउन जैकेट. मिड लेयर मतलब एक मिड वेट का डाउन जैकेट और साथ में आपको ये पतले वाले जितने भी आपके. So it depends the person. Some people they are very hot body one and they are very cold one, right? Correct. There are different kinds of the Polatic fabric one. Like a Polatic with the merino mixture, then after the Alpha Direct, then after 200 Classic and 300 series is impossible to take it for the trek because once this product gets wet, it's very hard to dry. Correct. Right? Normally it just get wet. Once you put it on from this side, from the backpack side, it easily get wet because you'll be carrying a backpack during the daytime, right? So you need something very breathable product if you want to carry only one, or else you need to carry 2 fleece jacket, right? So once you put it on this kind of a product, what happens? It will stick on your back. With the friction, it produces heat energy. Then again, you need to put your hard shell jacket. It might be a membrane or else it might be a Gore-Tex. So depending upon the client how much they want to spend on it, you know. So what happens, this will generate a heat energy, right, to your body. Then after hard shell will cover it up, you know. So when the wind blows, still you feel your own heat, you know. So it's basically depend upon that कि या तो फिर मैं ये 2 layering करूँ of this mid layer plus hard shell या फिर एक proper एक down jacket लूँ. Nahi, you cannot trek on down jacket. You're gonna be very sweaty. Down jacket you need it during the when you have to stay idle. Ideally, correct. Okay. Correct. During the daytime, you're gonna use your best layer and this one and your hard shell jacket. Once you reach your camp or your hotel, right? In that time, you will change your inner best layer. You're gonna take this out. You're gonna change with the new one, right? Then after you're gonna put a very good heavy down jacket so you don't feel any kind of cold, you know. Correct. So hard shell is something that you hard shell is something like this one, man. This one is a hard shell, right? This one is a membrane fabric and this one is a Gore-Tex. The difference between these two is a membrane is a Marmot own waterproof fabric and Gore-Tex is very renowned fabric, right? With the Gore-Tex, the waterproofness and the breathability is higher than the membrane fabric. So most of the professional people who go for a trekking or climbing, they usually go with that Gore-Tex one. Okay. So this is the only one product that you need to use once you start the trek from Kathmandu to top to Kathmandu. Perfect. So guys, अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप एक नामचे पहुँच गए देन उसके बाद आप ट्रैकिंग के वक्त क्या क्या चीज़ें पहन सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे लामा सोर्ट के अकॉर्डिंगली आप हैवी डाउन जैकेट पहन के नहीं आप चढ़ सकते. जब आप एक जगह पे बैठे हुए हैं रुके हुए हैं तब आपको डाउन जैकेट चाहिए ताकि आप उस सर्दी से बच पाए. लेकिन जब आप चलते हैं तो आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है तो इट्स आपके अंदर एक हीट प्रोड्यूस होती है जो कि आपको हेल्प करता है आपकी बॉडी को वार्म रखने के लिए. उस टाइम पे आपको एक ऐसा फैब्रिक चाहिए होता है जब आप एवरेस्ट बेस कैंप तक जा रहे होते हैं जो कि आपके बॉडी के हीट को अंदर रखे, प्लस ऐसा फैब्रिक जो कि आपका जो ये जो कपड़े हैं वो भीगे ना. बिकॉज ऑब्वियस बात है गाइस वहाँ पे बर्फ होती है और बर्फ होती है तो फिर डेफिनेटली कपड़े गीले होने के चांसेस है या आपके पीछे बैग है और अगर आपके स्वेट से भी आपके कपड़े गीले हो सकते हैं. तो ये जो ऐसे तरीके का जो फैब्रिक है मिड वेट फैब्रिक ये आपको हेल्प करता है. ये मरीनो वूल से बना हुआ है. ये आपको हेल्प करता है कि आप इसके अंदर आप अपने आप को कवर कर सके और आपका जो बिल्कुल जो बॉडी का हीट है वो बिल्कुल ट्रैप रह सके. बट
ये होता है हार्ड शेल, ये एक तरीके का सॉर्टेड फैब्रिक जैकेट है जो कि वाटर प्रूफ है, विंड रेजिस्टेंस है, और दिस इज द फैब्रिक जो कि आपको एक हार्ड शेल प्रोवाइड करेगा इसके ऊपर, ताकि आपका बॉडी हीट भी रहे अंदर, और साथ में ऊपर से आपके ऊपर जो भी स्नो आ रही है उसके वजह से आपका जो कपड़े हैं वो गीले नहीं रहे, बिकॉज एक बार ये गीला हो गया तो डेफिनेटली उसके बाद आपको ठंड लगने के चांसेस है, इसको सूखने में काफी टाइम लगता है. No, what happens even if you wash it dries faster, right? Okay. But if you are sweating, right? What happens if I put the AC on? If you are sweating, then then the product gets cold. Cold. Then after you might catch the cold, you know, like Okay. coughing, everything like that. Okay. That So- means कि इसको while we are just walking, जब स्वेट आता है तो डेफिनेटली ये बिल्कुल ठंडा हो जाता है, एंड देन आफ्टरवर्ड्स वी कैन गेट द कॉल्ड. Cold. Yeah, that's why the people they use this one, This one. just to stay away from the cold wind, you know, so you can protect it. परफेक्ट. तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे इसको पहनने के बाद ही जल्दी ड्राई नहीं होता है. इसका मतलब ये है कि यहाँ पे स्वेट जब आता है तो डेफिनेटली ये ठंडा हो जाता है, बिकॉज बार बार वो सूखता है, देन आफ्टर गीला होता है, और इस वजह से आपको ठंड लगने के चांसेस होते हैं, और इसलिए ये वाला जैकेट पहना जाता है. डेफिनेटली आप हैवी डाउन जैकेट को पहन के आप नहीं चढ़ सकते हैं, बिकॉज उसकी वजह से आपको काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो सकती है. इसका कॉस्ट क्या होगा? This one it starts from 8,000 to 30,000 rupees. 8,000 to 30,000 रुपीज इसका कॉस्ट है, प्लस इसका It starts from 20,000 rupees to till 60,000 rupees. 20,000 से 60,000. दिस इज द हार्ड शेल फैब्रिक, और हार्ड शेल आई वुड से कोट, आई वुड से. No, harshal basically this is called harshal because these are designed to keep you dry in any kind of wet condition. It doesn't matter where you go and what you do, but this one it will keep you dry from the wind and from the rain, right? Plus the breathability is very high. What happens technically? Hold one on, right? With the friction it produces heat energy, right? Then this one it will stick it over here like this way. For example, you see? Yeah, on the top of like this way, for example, right? So what happens? This one will stick over here, so it breathes very good. Good, yeah. Right? So it will dry the sweat because technically also, if you see, it looks very bulky, very thick, right? When you see it, there is a very good airflow zone. Correct. So technically, yeah, when you see it, like when you stretch it over here, there is a very good airflow system, right? You're gonna put base layer, this one and this one every day once you start the trek. And you're good to go with the day track. Day trekking. Perfect, Yes. So in the afternoon, once you reach your hotel campsite, what happens? This one will get wet because of the sweat, simply, right? Of course. So you're gonna change your base layer. You're gonna take this out. So you're gonna put new base layer. Right? So your new base layer. Then after you can put one very down jacket. So it will keep you warm like this, poof, you know. So what is the down jacket? The down jacket, it depends, man. Which one do you want to go with it, right? The down jacket, which you have a very wide range of down jacket. So guys, ये तो रहा आपके ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर आप डे में ट्रैक कर रहे हैं. डेफिनेटली दिस इज द बेस लेयर, दिस इज द हार्ड शेल, और इन दोनों को पहन के कॉम्बिनेशन से आप डे में ट्रैक कर सकते हैं, जहाँ पे ना ही ये ज़्यादा भारी है और ना ही ज़्यादा हल्का है, और आपको ठंडी हवाओं से भी बचाएगा. इसके बाद जब आप कहीं पे रुकते हैं, होल्ड करते हैं, तब आप अपना डेफिनेटली बेस लेयर हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका स्वेट आ जाएगा, पसीने आ जाएंगे, ये गीला हो सकता है. आप एक दूसरा बेस लेयर पहन सकते हैं और उसके ऊपर आप एक डाउन जैकेट पहन सकते हैं. डाउन जैकेट इज समथिंग जो इसमें डाउन फेदर्स लगे होते हैं, एक तरह के स्पेशल फेदर्स होते हैं जो कि डाउन डक से आते हैं, और वो आपको बहुत वार्मथ प्रोवाइड करते हैं, बहुत गर्म होते हैं. और ये जो डाउन जैकेट होती है काफ़ी सक्सेसफुल होती है एवरेस्ट जैसी जगहों पे चढ़ने के लिए. और इनके पास जो मैं देख रही हूँ काफ़ी वाइड रेंज ऑफ डाउन जैकेट है, जो कि आप डेफिनेटली आप आके यहाँ से बाय कर सकते हैं, और डाउन जैकेट से आप उन ठंडी हवा, उन चिली हवाओं से बच सकते हैं. So what happens if you want to go and purchase the down jacket, right? You should keep in your mind there are different kind of feel, like 600, 800, 700, 800 and 1000 feel. Okay? So higher the feel means higher the density of the goods down. Correct. Okay? So in 600, 700, normally the companies they put only a duck down, right? So this is the duck down feather. This was duck down, right? And if you go 800 feel, then they're gonna push the pure goods down, right? So when I open it like this way, you can feel a very big difference when you see the goods down.
Oh, that's so Right? warm. You see the fluffy warm? Right. Fluffy and very warm if I just put my hands inside. And when you see the dark down, it's like this one. But make sure that Less warmer, but no, it's warmer, but a bit heavier. heavier. So this both of the nowadays the company they get the down from a RDS approved company. RDS approved company. Yeah. Okay. Cool. Right? सो गाइस यहाँ पर डाउन जो जैकेट्स होते हैं इसके काफ़ी सारे वैरायटीज आते हैं. कुछ डक फेदर्स होते हैं डाउन में और कुछ गूस फेदर्स होते हैं. दोनों में काफ़ी डिफरेंस होता है जो कि हमारे को सर बता रहे थे. बेसिकली डक फेदर्स और डाउन और ये गूस फेदर्स दोनों के दोनों इक्वली काम करते हैं ऑन दैट ऑल्टीट्यूड. बट द पॉइंट इज जितना इसमें फिल होगा मतलब जितना ये फेदर्स भरे जाएंगे उतना वेट होगा. आप समझिए अगर आपने यहाँ पे 6000 आई दिस फिल No, 650 fill का heavy weight हो जाता है. 650 फिल का अगर ये दोनों भरा जाए तो डेफिनेटली डाउन जो होते हैं जो डक के होते हैं वो ज़्यादा वेट वाले होते हैं और ये गूज वाले लेस वेट वाले होते हैं. तो जनरली जब आप ऐसे ट्रैक पे जाते हैं या फिर ऐसी जगह पे जाते हैं माउंट एवरेस्ट जगह पे आपको वो कपड़े चाहिए जो कि लाइट वेट हो Yes, और and प्लस वार्म भी हो. और उस टाइम पे गूज फेदर्स वाले ये जो डाउन जैकेट से अच्छे काम करते हैं और आई एम श्योर ये ज्यादा महंगे भी होंगे. Right. No करेक्ट. doubt. सो नाउ आप हमारे Just one thing you should keep in your mind. You know what's that? Lighter the weight, higher the price. हायर द प्राइस, Heavy the weight, lower द प्राइस. सो इसका मतलब ये है कि जितना लाइट होगा कोई डाउन जैकेट का वेट उतना ज्यादा प्राइस होगा, जितना ज्यादा वेट होगा उतना कम प्राइस होगा. तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट. अब कौन से डाउन जैकेट्स हैं आपके पास बेस्ट, आप कुछ सजेस्ट करिए हमारे व्यूअर्स. Everest Base Camp trek, right? Yeah. So till now we are talking about Everest Base Camp. Okay. So normally, what do you need for the Everest Base Camp trek? As a lower part, and we call it upper part, right? For the lower part, you got base layer and a soft shell trousers. That is more than enough, right? But for the upper part, you need a base layer, you need a mid layer, you need a down and hard shell. Okay. Right? So what happens once you cross 4,000 meters, then you cannot predict the weather. Okay? So sometimes the people have to layer it up properly. Layering system, it means like this one: base layer, mid layer, down jacket, and hard shell. Hard shell gonna put above it. Above the down jacket, right? Okay. So will it goes above this down? Yes. Is that much stretchable? Yeah, not stretchable. It depends upon the sizes. Size. Right? So, or else, there's some people they do like that way. Some people they're gonna put base layer, mid layer, hard shell, and the down. In that scenario, the people who go that way, they buy a big puffy down because they believe that the only one product that will keep them warm is the down jacket. Correct. Okay. So people who are for like trekkers for the alpine system, then they're gonna go with the lighter weight. We call it the layering system, right? So this is also a 800 fill, and this one is also a 800 fill. But this one you feel more puffy and a bit heavier than that one because you have an extra down. An extra down means extra warm. So till you can go till 6,000 meters without any hesitation with this kind of a jacket, right? But some companies they named it and they're like this one 7,000 meters. So this kind of product that tested till 7,000 meters. So if you want to go for 8,000 meters, right, then you need a proper down suit. Okay, so it depends upon the budget how much you want to spend it, right? For example, if you want to go for 7,000 meter and you don't want to spend a lot, so what the people do, they buy this one and they buy other products, right? But this one they will use in the evening in all the camps, like Namche, Bangboche, Dingboche, anywhere, right? So and they're gonna use it for expedition, and the people who can afford it, then they go with the extra mid-layer jacket. So this one they will pack it up in the duffel bag and they will send to the base camp. It depends upon your budget how much you spend on it. It doesn't matter if you're gonna spend like 45,000 rupees. It's not like that you're going to spend like 39,000 rupees or 65,000 rupees or 57,000 rupees for a down jacket, right? People they hardly spend on it. So it's our job to show them the different variety of down, you know, because normally we suggest them with this kind of a down jacket.
But this is not only for base camp. But if you want to, but even if you want to travel in other countries, other cold countries like Finland, Norway, Europe, Denali, Definitely you Everest, need this one. definitely these are the product that is going to use it, right? So it's going to be a huge investment, but this is going to be your only one-time investment for a very cold scenario, man. Okay, and what about अगर ये गीला हो जाता है तो? Now, if this product gets wet, these are treated with a hydrophobic down with the nick wax, right? Before they manufacture it, the company, they will treat it with the nick wax system. So even the if it gets, because if it hardly gets wet, man, because the outer fabric is protects quantum fabric and the inner fabric is a hydrophobic down, right? So hydrophobic down means it's very hard to get wet. Even though if it's get wet, it takes time to lose the warmth, you know, and it will dry 2 times faster than other kind of a down jacket. And the other company, like the other company, they prepare with membrane DWR fabric. DWR means durable water repellency fabric, but the wrap they produce with hydrophobic down plus water resistant type of fabric for the outer layer. Even though if you get sweaty, this jacket will breathe very, very properly, man. Because once you get wet because of the sweat and anything else, simply you'll just open the jacket, right? In that time, what happened if the wind catch you? If the wind affect you directly, then 100% you'll get cold. So that's what the people they cough. Understood. Right? Cool. So now guys, coming on to the down jacket. So down jackets basically depend होता है आपके budget पे 45,000, 50,000 and it goes up to like 28,000, but the starting price will start from 19,000 rupees. Okay, तो 19,000 से लेके आपके बजट के अकॉर्डिंगली कहीं तक भी जा सकता है एंड डिपेंड अपॉन आप कैसे टाइप का डाउन जैकेट ले रहे हैं. तो उसमें भी कुछ वैरायटीज होती है. कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं कि वो मोटा डाउन जैकेट ले क्योंकि वो ये समझते हैं कि भाई ये लौता है ऐसा मटेरियल है जो उनको इतने ठंडी हवाओं से बचाएगा. जनरली लेयरिंग कैसे होती है, एक आपको बेस लेयर करना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको एक मिड लेयर डालना पड़ता है, फिर आपको एक हार्ड शेल डालना पड़ता है जो कि हमने आपको दिखाया था, फिर डाउन जैकेट डालना पड़ता है. कुछ लोग ऐसा प्रेफर करते हैं. कुछ लोग ऐसे प्रेफर करते हैं कि बेस लेयर डालते हैं, फिर मिड लेयर डालते हैं, फिर डाउन जैकेट डालते हैं, उसके बाद फिर हार्ड शेल डालते हैं. तो डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरे को गाइस बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो मैं ये सोचूंगी कि भाई मेरे को कोई ऐसा जैकेट दो जो कि मेरे लिए एक एज अ आई वुड से एक ऐसा जैकेट जो कि मेरी जान बचा. फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैं एक ऐसी बंदी हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैं डेफिनेटली चाहूंगी कि ये सोचिए कि भाई मेरे को ऐसा जैकेट मिले जो कि मेरे को ठंडी हवाओं से बचा दे, चाहे वो मोटा हो. तो मैं ऐसे मोटे जैकेट्स लूंगी. बट जो एक्चुअली में एक्सपर्ट होते हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं, वो उनको ये पता होता है कि मोटे जैकेट से उनके ऊपर हैवी वेट भी आएगा डेफिनेटली. तो उस वजह से वो इस तरीके के डाउन जैकेट प्रेफर करते हैं. ये थोड़े से ये कम फ्लफी होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं उनको वाइल ट्रैकिंग और वाइल जस्ट वाइल मूविंग एज वेल. और ये वाले जो फैब्रिक जो होते हैं, ये वाले तक के डाउन जैकेट जो होते हैं, ये इसलिए बेस्ट होते हैं मिड वेट वाले, बिकॉज इनके ऊपर प्रॉपरली ट्रीटमेंट होता है. इनके ऊपर हाइड्रोफोबिक मतलब ऐसा फेदर्स जो कि जल्दी गीला नहीं होता, वो वाले फेदर्स भरे होते हैं. प्लस इसके ऊपर प्रॉपर एक वाटर ट्रीटमेंट होता है. इसके साथ ही अगर ये गीले भी हो जाते हैं तो इसके ऊपर ये पीछे से जो इनकी जैकेट्स है काफ़ी ब्रीथेबल होते हैं, मतलब एयर आराम से फ्लो कर सकती है. तो इसलिए जल्दी गीले अगर आपके अंदर से स्वेट भी आ रहा है तो जल्दी सूख भी जाते हैं. 2 टाइम्स जल्दी सूखते हैं और ये गीले जल्दी नहीं होते हैं. इस वजह से ऐसे मिड वेट वाले डाउन जो यहाँ पे जैकेट्स है फ्रॉम द रैप, ये सबसे बेस्ट होते हैं. जनरली इसका कॉस्ट जो मैं देख रही हूँ समवॉट कितना है, 39,000 है. बट ये एक तरह का आपके लिए एक मेजर इन्वेस्टमेंट है. फॉर एग्जांपल अगर आप काफी कोल्ड कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल नॉर्वे, फिनलैंड, जहाँ पे डेफिनेटली माइनस में रहता है आपका टेम्परेचर, तो उस जगह पे भी आप ये डाउन जैकेट्स अपने लिए यूज कर सकते हैं. इट्स नॉट ओनली फॉर द माउंट एवरेस्ट थिंग. तो ऐसे यहाँ पे काफी सारी वराइटीज, काफी सारी रेंज होती है और यहाँ पे इस मार्मॉट के शॉप पे आपको हर एक रेंज मिलेगा अपने बजट के अकॉर्डिंगली और आप उस बजट के अकॉर्डिंगली आप बाय कर सकते हैं.
गाइस यहाँ पे एक लेयरिंग से काम नहीं चलता है फॉर श्योर, तो आपको मल्टीपल लेयरिंग करनी पड़ती है और उसके हिसाब से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और कॉस्ट भी होता है। लोअर्स की बात करें तो डेफिनेटली आप बेस लेयर और अपने एक सॉफ्ट शेल फैब्रिक ट्राउजर से आपका काम चल जाएगा, बट फॉर अपर के लिए आपको डेफिनेटली 3 से 4 लेयरिंग करनी पड़ती है और इसके बाद फिर डिपेंड अपॉन मेरे जैसे इंसान हो तो 10 भी कर लेगा बट डेफिनेटली फॉर श्योर यहाँ पे ऐसे फैब्रिक्स है जो कि 3-3, 4-4 लेयर्स के बराबर एक यहाँ पे जो कपड़े हैं वो काम करेंगे। सो दिस इज अबाउट द क्लॉथ्स।